मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी जो हमारे अगले अमृत रत्न का ऐलान करेंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, अब उनका सम्मान जिन्होंने पूरी मानवता के मिशन को सफल बनाया। चंद्रयान-3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाली इसरो की टीम है अमृत रत्न। भारत इतिहास रच रहा था, दुनिया देख रही थी। 23 अगस्त 2023 की शाम अंतरिक्ष में कुछ अविश्वसनीय और अद्भुत हो रहा था। भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतर रहा था। घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 6:04 का वक्त दिखाया, इतिहास बन गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने सॉफ्ट और सुरक्षित लैंडिंग की। चांद के जिस हिस्से पर कोई नहीं पहुंच पाया, वहां भारत पहुंचा। चांद के जिस टुकड़े को किसी ने नहीं देखा, उसे इसरो ने दुनिया को साक्षात दिखाया। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रयान-3 का लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा। चंद्रयान-3 की सफलता को दुनिया ने विकसित भारत के शंखनाद के तौर पर सराहा। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान-3 की सफलता के लिए इसरो को बधाई दी। अंतरिक्ष में भारत को मिली इस अभूतपूर्व सफलता के लिए न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है टीम चंद्रयान का सम्मान, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया देश का मान। अमृत रत्न। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथुमेल, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना के, मिशन ऑपरेशंस डायरेक्टर एम श्रीकांत और आदित्य L1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी का अमृत रत्न। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि एक बार आप सब खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए टीम चंद्रयान का। ये है देश की आन बान और शान। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को इतिहास दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए टीम चंद्रयान का। हमारे साथ मौजूद हैं पी वीरमुथुवेल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान-3 के, कल्पना के, एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान-3 की, एम श्रीकांत, मिशन ऑपरेशंस डायरेक्टर चंद्रयान-3 और आदित्य L1 के, निगार शाजी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर आदित्य L1 की। आप सबका अभिनंदन है। निगार, पहला सवाल आपसे मेरा, और मैंने आपको वादा किया था मैं आपसे हिंदी में ही पूछूंगा, और आपने वादा किया था कि मैं कोशिश करूंगी हिंदी बोलने की। तो लेट्स सी। तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन व्हेन Chandrayaan-3 reached at the point Shiv Shakti? Yeah, it's ultimate jubilation for ISRO as well as for the team Chandrayaan-3, and also we were also very relaxed because we have been working for the last 4 years, the entire team. We are just the faces of the team.
and the entire team worked, toiled for 4 years, for 24/7, and so that's a huge success, and it belongs to the entire team, and it is the testimony for ISRO's teamwork. So we were all very jubilant. जी कल्पना बदलाव क्या है इन 2014 हमने देखा नरेंद्र मोदी आए सरकार के अंदर, आपने बदलाव क्या देखा है पिछले 10-15 सालों के अंदर, क्योंकि हमने एक तरह से क्रिकेट मैच की तरह सेलिब्रेट करा चंद्रयान-3 के लॉन्च को। ये बहुत बड़ा बदलाव लाया है। पहले तो तालियां इनकी हिंदी के लिए। थोड़ा ट्राई करूंगी। जी जी। Definitely, after Chandrayaan-2, whatever Chandrayaan-2 itself was the aim or the goal was a challenging goal. When we targeted for a soft landing, we had done our best towards that, and what finally we saw was we couldn't achieve that final goal. But whatever we learned from that Chandrayaan-2 mission, we took it forward and we worked in Chandrayaan-3 with ultimate team effort, and we had given our best towards the total effort was our best efforts, because our aim was to finish the unfinished what we had taken up in Chandrayaan-2. So we had put in whatever required, be it the tests or the simulations or the overall configuration, and what we achieved was the whole nation has cherished. So that moment was really unforgettable. Veera Muthuvel, my question to you, sir. As per you, do you think why Chandrayaan-3 succeeded, and as per you, why Chandrayaan-2 did not succeed? No, For the common man, if you want to tell. Chandrayaan-2, if you see the previous 3 countries attempted, there were several unsuccessful attempts. US has failed, 3 unsuccessful attempts were there before the first successful attempt. Even USSR was having 11 unsuccessful attempts. So Chandrayaan-2 also, we had 3 distinct objectives. One is orbiter, lander and rover. The last part of the lander, we could not achieve the safe and soft landing. But we also failed, we also learned from the failure. The initial step was to understand what went wrong, and we pinpointed the root cause, and the corrective action was taken at the very beginning of the Chandrayaan-3 project. In addition to that, we have built a lot of robustness and thousands of simulations and thousands of tests that gave a confidence before the launch. And this time we were very sure that we will have a safe and soft landing. The way in which we crafted the lander, we built with lot of multiple mission parts. Whatever fails, for example, sensor failure or propulsion failure or any other systems underperformance or overperformance, we built a mission parts such a way that we will have a soft landing. That was our goal. Just to add to what Virumuthu was saying, he's right, because our record of unsuccessful is dismal compared to the other countries. But I would not say it was unsuccessful also, because it was just in the last moment that it didn't perform the manner in which we had expected. We had much more expectation from Vikram than possibly we had trained him for, which of course he performed in the subsequent mission. And the very fact that it was successful, it was very much alive there, is borne out by the fact that when Chandrayaan-3 went, it was received by the welcome buddy. That was the message. So it was still alive. In a way, in the last moment we went little, but of course in the Chandrayaan-3, as is rightly being mentioned, all the an extra care had been taken because the entire dynamics were different, the soft the mechanisms were different, and just remember, Chandrayaan-3, we ventured into a virgin area, southern pole. So that was one step ahead of Chandrayaan-2 also. And the last moment is possibly the most nervous, when it's just about 150 meters, because then you leave it to the wisdom of Vikram. That is his test then. How best the project director has trained Vikram. Because I was telling him that it's just like you train the sun. You were there. Yes, it's just like training the sun, and then when he goes to the war front, then you are not communicating with him. Then comes to the test, whatever has been trained of him.
because that is the last moment when Vikram has to decide where to land, which the limited area of about 40 meter or so, and if it doesn't, then the time is out. Muthuvel ji, you want to add something? No, it is 24 meter by 24 meter. We have to identify the safe pocket, whatever sir was referring that at 150 meter hovering point. So it has to take, we have a camera which is hazard detection and avoidance camera, which will avoid the obstacles. At the time of landing, we should not have a toppling. So it will take an image, already the image is stored a priori to launch, and it will compare and it will give a safe pocket of 24 meter by 24 meter. And our lander size is approximately 4.5 meters diameter, so that we will have that engineering constraints are met. I'm just asking, being curious, और अगर मेरे से कोई गलती हुई तो आप माफ भी करना. Did Chandrayaan-3 send some pictures of Chandrayaan-2? How it is performing? No. Yes. Yeah, it's pictures of Chandrayaan-2. 2, yeah. No, Chandrayaan-2 had taken the picture of Chandrayaan-3 Okay. because the orbiter life was earlier designed for one year. Right now it is more than 4 years. पहले से ही कैमरा लेके खड़ा था ना. कैमरा ले, अच्छा वो रिसीविंग पार्टी में था. हाँ, वो पहले. अच्छा, एम श्रीकांत इज वेटिंग. तो सर एक सवाल मेरा है, हिंदी में पूछूं ना आपसे मैं? तो एक सवाल मेरा आपसे है, पहले भी आप अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ कहीं जाते होंगे, इसरो बोलते होंगे, और अब जब बोलते हैं कुछ फर्क दिखाई देता है. डू यू सी अ डिफरेंस? सर फ़र्क है, बिकॉज क्या है ना, रेस्पेक्ट, हमने एक रेस्पेक्ट मिला है, सभी को रेस्पेक्ट मिल रहा है, और जो अचीवमेंट हम लोगों ने किया है वो छोटी बात नहीं है, पूरा देश गर्व है उसके कारण. तो होल वर्ल्ड इज सीइंग अस. चलिए, ये तो चंद्रयान की बात हुई. मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ. ये आप लोग सब साइंटिस्ट लोग हैं. अमित जी, इनसे पूछिए अभी इनकी सेल्फियां कितनी खींची जा रही हैं. They will answer. वो पूछ रहे कितनी सेल्फी खींची जाती है अब कहीं जाते हैं तो. अभी तो मैं देख रहा था कंगना रनौत भी आपके साथ सेल्फी खींच रही थी. सेल्फी, दैट इज द डिफरेंस. वही रेस्पेक्ट है सर. तो एक सवाल, ये क्यों आया डिफरेंस? सर अभी तक जो सब लोग देख रहे थे, हम लोगों ने अभी काम करके दिखाया है. नॉट वर्ड्स, वे आर शोन बाय वर्क. वर्क gives you respect. If you do it with wholehearted and hard work and sincerity, it will give you respect. That is what shown. एक सवाल, इस कल्पना अगर आप इसका जवाब दें, जब Chandrayaan-3 लॉन्च हो गया, सक्सेसफुल हो गया, एंड यू गॉट द न्यूज, नाउ इट इज वर्किंग वेरी वेरी फाइन, पहली चीज आपने क्या करी? First is actually thanks to God and sharing these moments with all our near and dear. But first, if you see the next almost another 24 hours we were in office only because we were continuing with further rover operations, because further to soft landing we had the rover operations, because that it is a critical operation. So we had to, whole team was there taking care of that, and with the rover coming rolling down and taking the images, and also lander taking the images of rover, all these things were the moments which we cherished. It is like it is the most unforgettable moments, particularly even when the rover came down, when we saw our national flag on the rover. That is something which we can never forget for a lifetime. So those were the most आप क्या कोई भी नहीं भूल सकता. इस कमरे में बैठा हमारे जो व्यूअर्स करोड़ों देख रहे हैं, कोई भी नहीं भूल सकता उस बात को. और जब हमने तिरंगा वहां देखा तो वाकई हम सबको बहुत गर्व हुआ था, और उस गर्व की वजह सब आप लोग थे. लेकिन मेरे तो सबसे पहले जी, अब इस, आई नो मेनी इन दिस रूम मे नॉट बी अवेयर, इसरो हैज इट्स ओन वर्क कल्चर. मैं जो कहता हूँ बड़ी जगह कि इट इज़ वर्थ एम्यूलेटिंग बाय अदर्स एज वेल. जब भी कोई लॉन्चिंग होता है तो लॉन्च व्हीकल के पहले जाके तिरुपति में वहाँ माथा टेका जाता है, और जैसे ही सक्सेस अनाउंस होती है तो पहली चीज़ होती है कि एक लड्डू बांटा जाता है. सो फर्स्ट थिंग आपने लड्डू पूछा, बूंदी के होते हैं या बेसन के होते हैं? नहीं, वो तिरुपति टाइप का, तिरुपति के लड्डू होते हैं. वो पहली चीज वही होती है. अच्छा, एक आप सब लोग साइंटिस्ट हैं, ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत पढ़ाई करी होगी, और फिल्म वगैरह भी देखते थे आप लोग क्या? अभी भी देखते हैं? तो कौन सी फिल्म देखी आपने लास्ट? अब देखिए, आप इन्होंने तो देखी है, एम श्रीकांत ने तो, और मुझे लगता है 2-3 देख ली आपने.
अभी तो लेटेस्टली 3-4 महीने से कुछ देखने का चांस नहीं मिला सर, 3-4 महीने से कोई चांस नहीं मिला। क्योंकि पूरा काम में इन्वॉल्व थे। अभी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है देखने का। You? At least not for the past last 1 year. It was like not much, no going to movies as such. Of course, in TV we could watch, but now yeah. हाँ, TV पे भी देखी हो मतलब? Yes. You have seen? Yes. Which one? At least in OTT, I was seeing some movies which I had missed, like the 83 I saw. Whichever I missed, good movies. Okay. Yes. Nigah Shah ji, you want to comment anything about it? I watched. I think before, because she's being modest, she's our woman director of Aditya Mission. Yes. So I think, and I have no hesitation in saying I have been going around the country to say that gone are the days when we talked of women participation. India has... They are leading from the front, India sir. has graduated to the now women leadership. Now it's for us to accept the leadership. So she's leading the team Aditya. Ma'am, you're saying something, please. I normally watch Tamil and Malayalam movies. So I too enjoyed after a long time. They're my favorite movies. So which one is your favorite? So Malayalam movie. Yeah, you can name them. I don't remember the name now. मैम आपको फिल्म का नाम नहीं ध्यान में आ रहा, लेकिन आपको फॉर्मूलाज इतने ध्यान में आते होंगे, वो आपको अभी यहाँ पे कोई पूछ ले तो आप तुरंत बता देंगी. Yeah, You will. one more thing is I could enjoy all the Asian Games live Okay. after this. So always evening I used to watch because In I'm Asian also- Games also we have done well. Yeah, because I'm also in school days I am a sprinter, so Okay. I watch. All That's a very good. That's very good. You want to say something? You want to say something? You don't want to say anything. You don't watch movies. No, I watch movies. But recently, no, I have not watched for some time. So. अच्छा, tell me, what are the future plans of ISRO? What you are bringing on the table now for the Indians? This I can't say. I Okay. will talk about Chandrayaan-3 because our management... Ma'am, you want to say? future plans. Okay. As a minister. Now we have opened up. Space is unlocked. So no confidentiality. Our next month, in fact, on the 21st, we are going to the first test flight of Gaganyaan, the first human flight. Though the first Indian to have flown into the space was Rakesh Sharma, but that was a Soviet flight. Now we'll have purely indigenous. But see, setting up a man into the space is as important, and more important that is to get him back safe. So we are going to have 2 test flights. One is going to be on the 21st of October. We will go around just miming the flight. Then the second one, maybe in the beginning of next year, will be one which would have a robo, a female robo called Vayomitra. She would mimic all the activity that the live astronaut has to do. And when it gets back safe, as we expect, then we send up the human being. So I think that's going to be the important mission from India's point of view. You want to add something? Thank you so much. आप लोग यहाँ पर आए और आपने हमारा मान बढ़ाया, देश का मान बढ़ाया, देश का सम्मान बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आप ऐसे ही काम करते रहे, ऐसे ही देश को आगे बढ़ाते रहे. ये शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, देश की तरफ से. कृपया कुछ देर और मंच पर बने. यहाँ एक्सीडेंट हो गया. वो जो डायलॉग था ना आपका कि भारत किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई भारत को छेड़े